Bismillahirrahmanirrahim. Our topic name is exponential and logarithmic function, and in this regard, this is our lecture number 30th, and it is our last lecture of this week. And one more thing, that with this lecture we closed all our course contents of this semester, and in our coming week I will try my best to make a revision of some topics that is relating with most of the students shows their express their problem, that we feel problem in solving Gauss elimination method or 3x3 system. So I try my best to solve those questions relating to Gauss elimination method. Here we start our lecture. Logarithms and logarithmic functions. Logarithms. A logarithm is a power of which a base must be raised in order to yield a given number. A logarithm is the power to which a base must be raised in order to yield a given number. Consider the equation 2 raised to the power 3 is equal to 8. I am applying log on both sides, that is log 2 raised to the power 3 is equal to log 8. Using the property of log, I take this 3 in front of this log. I am writing it as 3 log 2 is equal to log 8. Then I divide this log 2 here, and becomes 3 is equal to log 8 divided by log 2. And this is our convenient way that we write these two log, which are in fractional form, as log base 2 to the 8. Log comes common, and the lower function becomes the base, and the upper function remains as it is. So in this general form, y is equal to b raised to the power x implies corresponding to x is equal to log b raised to the power y. In the same way as we do this equation, we convert or express this in a general form. Y is equal to b raised to the power x. Y is equal to b raised to the power x. How you can convert the exponential function into a logarithmic function? So you write it as log b. Okay, x is equal to log b raised to the power y. Now we see some examples. Logarithmic function and their corresponding exponential function. 4 is equal to log 2 raised to the power 16. Log 2 to the 16, and it is written as 2 raised to the power 4 is equal to 16. This 2 goes to this side and become the base of 4. Okay, so you write it as 2 raised to the power 4 is equal to 16. Similarly, 2 is equal to log 10 to the 200. So you write it as 10 raised to the power 2 is equal to 100. 3 is equal to log 3 base 3 to the 27. So you write it as 3 raised to the power 3 is equal to 27. Both give the same answer. Minus 1 is equal to log 10 to the 0.1. So you write it as 10 raised to the power minus 1 is equal to 0.1. Now we take some other examples from how we can move from exponential equation to the logarithmic. 10 raised to the power 4 is equal to 10,000. So when you convert it, this expression of exponential function in log, you get 4 is equal to log base 10 to the 10,000. 4 raised to the power 3 is equal to 64 is equal, in a corresponding way it is equal to 3 is equal to log 4 log base 4 to the 64. In this way, 5 raised to the power 2 is equal to 25. This is equivalently written as 2 is equal to log base 5 to 25. 10 raised to the power minus 2 is equal to 0.01, equivalently written as minus 2 is equal to log 10 to the 0.01.
Now I define the types of logarithm. There are two types of logarithm. Logarithm. Number one, log base 10. Log base 10, oftenly called the common log. Often we call is the common log, and it is written as x is equal to log 10, log base 10 to the y. So it is written as x is equal to log y. Log y. And the second type is log base e. Log base e, oftenly called natural log. And you see here, x is equal to log base e to the y, and then you write it as x is equal to log natural y. Now we move towards the properties of logarithms. Number one, log base b to uv is equal to, here two functions are multiplied with each other, and you know that when two functions multiplied each other, when you apply log, it becomes, separate them with a positive sign. Log base b to u plus log base b to v. Here the example relating to this property, log base 10 to 100 into 1000. Then we write it as log base 10 to 100 plus log base 10 to 1000. And in the similar way, I am writing it as, by using the definition in which I solve the example, log base 10 to 100, I am writing it as log 100 divided by log 10. Here log 1000 divided by log 10. And 100 is written as 10 raised to the power 2, and 1000 is written as 10 raised to the power 3. By using again property of log, this 2 comes in front of this log, and this 3 comes in front of this log, and become 2 into log 10 over log 10 plus 3 into log 10 over log 10. This log 10 is cancelled with this log 10, and this log 10 is cancelled with this log 10, and then we simplify this. 2 plus 3 is equal to 5. In the same way, second property is log base to the u over v. When two functions are divided, when we apply log, it separate the function with a negative sign. So we take an example here, log base 10 to 10,000 over 100 it is equal to log base 10 to 10,000 minus log base 10 to 100, log 10,000 divided by log 10 minus log 100 divided by log 10. It is equally written as log 10 raised to the power 4 divided by log 10 minus log 10 raised to the power 2 divided by log 10. This 4 comes in front of this, and this 2 also comes in front of this. So it is written as 4 into log 10 over log 10 minus 2 into log 10 over log 10. This log 10 is cancelled with this log 10. So after simplification we get 4 minus 2. This is equal to 2. Here property number 3, log base b to u raised to the power n. It is equal to n into log base b to u. So example is log base 10 to 100 square. So equivalently written as log 100 raised to the power 2 divided by log 10, and we take this 2 in front of this log, and this 100 is written as 10 raised to the power 2. Again we simplify this, we get 4 into log 10 over log 10. After simplification we get 4. Property number 4 is log base b to the b is equal to 1. So you write it as log base 10 to 10. It is equal to log 10 over log 10 is equal to 1. 5 is log base b to 1 is equal to 0. Here its example is log base 10 to 1 is equal to log 1 divided by log 10, and you know that log 1 is equal to 0 divided by log 10, 0 over something, that is equal to 0. Its property number 6 is b raised to the power log base b to x is equal to x. So in this way its example is 10 log base 10 to the 100 is equal to 10 into log 100 over log 10, and in simplified form I am writing it as
2 into log 10 over log 10. This log 10 is cancelled this log 10 and it becomes 10 raised to the power 2. This is equal to 100. This last property, that is property number 7, log base b to the b raised to the power x, that is equal to x. So its example is log 2 to 2 raised to the power 5 is equal to log 2 to raised to the power 5 divided by log 2. This 5 comes in front this. I am writing it as 5 log 2 divided by 2 is equal to 5. Now we see some equations that are solved with the help of logarithmic equations, with the help of logarithm. So example is solve the logarithmic equation log natural x square plus log natural x is equal to 9. And you know that when two logs are added with each other, it is equal to the product with a log. It is written as a product. So I'm writing using the property, I'm using this property, I'm writing it as log into log natural into x square into x is equal to 9. So it is written as log natural x raised to the power 3 is equal to 9. This 3 comes in front of this, it becomes 3 into log natural x is equal to 9. And then when I divide this 9 by 3, we get log natural x is equal to 3. And log natural x is equal to 3, and then I'm writing 1 in front of this 3, and you know that log natural e is equal to 1. So I substitute at the place of 1 log natural e, and this 3 becomes the power of e. Log natural x is equal to log natural e raised to the power 3. So you cancel this log natural x, you cancel this log natural with this log natural, and you get x is equal to e raised to the power 3. And if you evaluate this, its value is 20.086. Okay. Here another example is solve the logarithmic equations log natural x square plus 2 minus log natural x square is equal to 2. Here two logs are subtracted. So again using the property in which two logs are subtracted, it is written as it is written in the form of a fraction. So I am writing it as log natural x square plus 2 over x square is equal to 2. And then I write 1 in front of this, and at the place of 1 I am writing log natural e. And this 2 becomes the power of this e. And then I cancel with this log natural with this log natural, and remaining is x square plus 2 over x square is equal to e square. And you know that e raised to the power 2 is equal to 7.83891. 3891. When I simplify this, x square plus 2 is equal to 7.3891 into x square, and then I take this x square towards right side. It is equal to 2 is equal to 7.3891 x square minus x square. After simplification I get x square is equal to 2 over 6.3891 is equal to 0.3130, and x is equal to, when I take square root on both sides, it is equal to x is equal to plus minus 0.5595. अब मैं दोनों एग्जाम्पल्स को मैं उर्दू में समझा देता हूँ आपको. तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें कहता है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करें, और ये इक्वेशन आपके पास क्या है, लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल टू 9. और हम जानते हैं कि अगर दो लॉग ऐड हो रहे हो तो वो लॉग की फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं. हमारे पास लॉग उनको मल्टीप्लाई करता है. अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग उनको सेपरेट करके दरम्यान में साइन प्लस का लगा देते हैं. तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहे हैं तो वो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा. तो हमारे पास यहाँ लॉग नेचुरल कॉमन आ गया, और एम और एन की जगह हमारे पास जो फंक्शन हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. और ये हमारे पास आ जाएगा लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 9. लॉग नेचुरल जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9. तो ये आ जाएगा 3 लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल टू 9. तो इस तरह हमारे पास लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3. अब मैंने वही जो पिछले हमने लेक्चर में किया था कि इस 3 के आगे मैंने 1 लिख दिया. और आप जानते हैं कि जैसे लॉग नेचुरल लॉग ई हमारे पास 1 होता है, तो इस तरह लॉग नेचुरल ई भी हमारे पास क्या होता है, 1. तो फिर इस 1 की जगह मैंने क्या किया, लॉग नेचुरल ई लिख दिया, और ये 3 इस ई की क्या बन जाएगा, हमारे पास पावर बन जाएगा. तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ई रेज टू द पावर 3.
तो ये लॉग नेचुरल से लॉग नेचुरल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ई रेज पर 3। और अगर इसको मैं इवेल्युएट करता हूँ कैलकुलेटर के जरिए तो ये आ जाएगा 20.086। ठीक है, अगर ये कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो टेबल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एग्जांपल है सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास दो लॉगरिथमिक फंक्शन दिए हुए और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे पास। और हम जानते हैं कि अगर दो लॉग नेचुरल वाले फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको उसी तरह लॉग नेचुरल कॉमन आ गया और बाकी दोनों फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इस तरह 2 के आगे मैंने क्या लिखा है 1, और आप जानते हैं कि 1 किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल ई। और इसका ये 2 जो है इस ई की क्या बन जाएगा, पार बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लॉग नेचुरल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ई स्क्वायर। तो इस लॉग नेचुरल से लॉग नेचुरल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। और जानते हैं कि ई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 7.3891। ठीक है, और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करता हूँ राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 7.3891 एक्स स्क्वायर। और जब इस एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.3891 एक्स स्क्वायर। जब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको 6.3891 को डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर 6.3891 इज इक्वल टू 0.3130। और जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5595। अब इसी तरह की हमारे पास जो एक एक्सरसाइज है 7.2 वो बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर है, इसी लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर है। आप उसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हर उसमें से पार्ट में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप करें। अगर नहीं आते आप मुझसे पूछ लें, हमारे पास टाइम होगा क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है। और उसके बाद आपके 15 जुलाई तक जो हमारी एक डेट दी हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ दोबारा ओपन हो जाएंगी। अगर वो ओपन होती हैं तो फिर पेपर आपके जो हैं वो 20 जुलाई से यूनिवर्सिटी में ही होंगे। अगर नहीं होते तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक हमारे पास टाइम है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं ग्रुप में पूछ लिया करूँगा। अगर किसी को चीज़ नहीं आती तो मैं ऑनलाइन उसका लेक्चर जो है जूम पर वो आपको डिलीवर कर दूंगा। कोई भी केस के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे काइंडली वो बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व करवाऊँ, ताकि पेपर आपका अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। तो ये आपका इस वीक का आखिरी लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, नहीं समझ आती तो काइंडली मुझसे आप वो पूछ लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।